सुपर्ण बहुत सीरियस था यार, बहुत प्रॉब्लम होती थी very सुपर्ण। serious, very very serious. बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल था होती थी to सुपर्ण के like have साथ, a बहुत। conversation हाँ, with Suparn. हम सबसे डांट डांट के हम बोलते थे यार हम लोगों से, डांट डांट के क्या कर रही है तू. But no, it's true. He actually yelled at me because I have this big smiling face and he would be like, बिल्कुल smile बंद, smile बंद. मैंने कहा smile बंद. go for it, कुबरा, go for it। कुबरा यार तुम्हारी फन नींद क्या बहुत अच्छी है, यार. बताओ। क्या यार इतना गंदा, you put me on the spot यार. मैंने सुपर्ण के चश्मे छुपा दिया. बैकअप नहीं होगा आज, जीपे करो Wow. अमाउंट, जीपे में मनी राइट नाउ। बिल्कुल नहीं यार, we owe him a lot of money यार. We owe him a lot of money. Actually, he owes Kajol the most amount of money. No, she owes me. But I walked into this office and I never felt I was meeting Suparn Verma for the first time in my life because he walked in from like 1 mile going like, जाने जिगर, जाने मान, तू ठीक है, मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा, अरे यही तो ना, कर लेंगे, बस तू आ जा. And the camera just being absolutely and completely in love with her. So it is a mix of too many things. Not like you're really working with a star. I mean, she of course comes with that thing, but because she is that. But truly, when you're working with her, it's really like working with a really gifted actor. Hi Kubra, hi Suparn, hi Shiba ma'am. How are you all doing? एक और महीना वापस तुम्हारे पास तोनाक्षी। राइट, लेकिन ये दिल्ली में होना चाहिए था यार, ये जूम में नहीं होना चाहिए था. I know. Please file a police complaint to Hotstar. आप एक काम करते हैं, कलेक्टिवली करते हैं, आप हमें मिलके करते हैं. कलेक्टिव मेरी एजेंसी का नाम है। सही तरीका है इसको यहाँ पर लगाने का. बट पहले राणा नायडू, फिर सिर्फ एक बंदा काफी है, दोनों सुपर हिट्स. और क्या अब ये तीसरी जो ट्रायल आ रही है, क्या यहाँ पर भी ये होने वाला है? I hope हैट्रिक हो जाए, कितना मजा आएगा। I called it. I called it. Super हैट्रिक। Yeah. मुझे लगता है ये हैट्रिक इस बार होने वाली है. शिवा, 100%. what is your say on this? लगता है होगा? क्या बोल रहे हो आप? सॉरी, आई लॉस्ट यू. हैट्रिक होगा नहीं होगा, बोलो होगा। माने क्या ही yes, इसमें yes, कोई बोल देना दो चाहिए. राय नहीं है. हाँ जी, हैट्रिक। कबूल है। वही वैसा वाला ओके गाइस, तो ट्रेलर देखा है, मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे कोलीग्स ने देखा है, एंड सभी के जुबान पर एक ही चीज थी कि कुछ जबरदस्त आने वाला है. ट्रेलर ने वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं क्रिएट कर दी है ट्रायल को लेकर. बट सुपन, आई आस्क यू फर्स्ट, आप ही बताइए कि कोर्ट रूम ड्रामास अभी रिसेंटली भी हमने कई देखे हैं, लेकिन हाउ इज दिस वन डिफरेंट फ्रॉम देम? वेल, कोर्टरूम ड्रामा इसमें 20% है, बाकी तो मतलब इनकी निजी जिंदगी में क्या हो रहा है उसकी कहानी है. डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर ये है कि आज तक आपने काजोल को देखा है कि उसका हीरो उसको किसी आदमी से चुरा के लेके जाना चाह रहा है, उसके फियांसे से भगा के लेके जाना चाह रहा है, ट्रेन में चढ़ा रहा है, बस में चढ़ा रहा है. यहाँ कहानी शुरू होती है कि चलो शादी हो गई, कट टू हस्बैंड चीट्स ऑन हर, गेट्स स्लैप्ड, नेशंस हार्ट थ्रॉब, हार्ट इज ब्रोकन. कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम शुरुआत ही अलग कर रहे हैं. ओके, तो कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी तो क्रिएट की है, जैसे मैंने बोला कि, एंड ये भी दिख रहा है कि जिस लॉ फॉर्म में फाइनली वो एंड अप करती है, जो हमें ट्रेलर से समझ आया, मैं वो बता रही हूँ कि वहां पर भी बहुत सी चीजें हो रही हैं. तो कहीं ना कहीं वो वाली कहानी भी है. दैट्स व्हाई आई थॉट कि कुछ डिफरेंट टेक है, कुछ डिफरेंट एंगल हमें दिखने वाला है. शिवा मैम, यू टेल मी कि पहली बात तो ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ बिकॉज आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है इसमें. ट्रेलर में बहुत लुकिंग वेरी हॉट. मैंने अपने बाल निकाल के इनको दे दिए, अब तुम समझी तोनाक्षी क्या हुआ. मैंने भी अपने बाल काट के थोड़े शिबू को दे दिए. करेक्ट. हाँ जी. तो आपका तो अब आप बताइए कि हाउ डिड दिस हैपन फॉर यू? ट्रायल की प्लानिंग कैसे हुई? हाउ डिड यू कम ऑन बोर्ड फॉर दिस, एंड व्हाट वाज द मेन रीजन जो आपको लगा कि कुछ अलग है इस कहानी में जो चलेगी? तो सबसे मेन रीजन तो जो आपने कहा वही है. मतलब एक बहुत अच्छा विग लगाने को मिला और कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लिए, तो वेरी गुड रीजन टू डू अ शो. मतलब मैं तो वही, हम सब इंटरव्यूज में यही जवाब दे रहे हैं कि क्या वजह है कि कोई ऐसे शो को ना बोलेगा, है ना. Why would I say no to a show like this? Because everything is just working so wonderfully. सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े बेहतरीन लोग हैं, और कंटेंट बहुत बढ़िया है, और सुपर्ण भी ठीक ठाक ही है. तो फिर ऐसे में काहे को कोई नो बोलेगा यार. So just so happy to be a part of this show. सुपर्ण ठीक ठाक हो आप, देखो कौन सा ठीक है. आपने गुलजार साहब का गाना सुना है?
हम भी ठीक ठाक हैं, हाल भी ठीक ठाक है, तो दिस इज हाई प्रेज। हाँ, हम ठीक ठाक में बहुत खुश हैं। कुपरा, यू टेल मी, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट क्या था इस कहानी का पार्ट बनने का आपके लिए? मैंने मिलते ही इनका हाथ तोड़ दिया। That's not true. But I think there were so many reasons. I mean, the fact that I got this show was a reason to celebrate, and I think Supan's going to agree with that because बहुत महीनों पहले casting call आया था और फिर लोग गायब हो गए. But then literally to like chase this call down, because the minute I got the call that we want you to be a part of, the remake of The Good Wife, it's called The Trial. I wanted to know how to get in touch and how to make this happen for me. So literally it was like one Chakravyuh after Chakravyuh after Chakravyuh, and then finally I got this part, and the minute I did, it felt like यार मैंने इतनी मेहनत की है और ये सब हो रहा है. In reality, I'm actually going to be working with a stalwart crew. But I think for me it was really exciting because the first time I met Supan Verma, I'd just been diagnosed and my hand was broken. Okay. So, sorry, it's not a remake, it's an adaptation. Sorry. So, I was in a cast and I was very scared. I thought, that's it. I'm not going to be able to work on this show. Because why would anybody want to take over my pain? And, why would anyone want to take the responsibility of, how I'm feeling mentally? Do you think you'll deliver? You won't deliver. But I walked into this office and I never felt I was meeting Supan Verma for the first time in my life, because he walked in from like 1 mile going like, जाने जिगर जाने मन जाने बाहर, तू ठीक है, मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा, अरे यही तो है ना, कर लेंगे, बस तू आ जा. तो हाँ यार, ये ठीक ठाक रिस्पॉन्स ही था सुपन वर्मा का. इतनी कॉन्फिडेंस डायरेक्टर से आ रही है तो फिर ना कौन बोलेगा. सो या दैट वाज द रीजन. वाओ, दैट वाज ग्रेट. अच्छा, जिस तरह की कहानी हमें ट्रेलर से लगी तो उसमें लग रहा है कि कुछ इंटेंस है, सीरियस माहौल बना हुआ है थ्रू आउट ट्रेलर से दिखा. तो ऐसे सेट पर माहौल कैसा होता है? आई नो अबाउट सुपर्ण वेरी क्लियरली, बिकॉज मैं पहली बार इनसे मिली, जैसे आपने अभी बोला कि आप जैसे ऑफिस में गए एंड ऐसा माहौल था. तो जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, हमारे ऑफिस में आए थे राणा नायडू के लिए, फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात तब हुई थी. मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनको पहले कभी नहीं मिली. इट वॉज सच अ फन वाइब, वेरी कंफर्टेबल, तो आपको खुद को मजा आता है ऐसे लोगों से बात करने में, एक अलग माहौल क्रिएट हो जाता है. तो आई रियली वांट टू नो गाइस कि सेट का माहौल कैसा था. क्या कोई मस्ती मजाक हो रहा था, या क्योंकि सीरियस शो था तो उस चीज को कहीं ना कहीं मेंटेन रखना पड़ता था? सुपर्ण बहुत सीरियस था यार, बहुत प्रॉब्लम होती थी वेरी सुपर्ण. सीरियस, वेरी वेरी सीरियस. बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल था होती थी तो सुपर्ण लाइक के हैव अ साथ, बहुत. कॉन्वर्सेशन विद सुपर्ण. हम सबसे डांट के हम बोलते थे यार हम लोगों से, डांट के क्या कर रही है तू. बट नो, इट्स ट्रू, ही एक्चुअली येल्ड एट मी बिकॉज आई हैव दिस बिग स्माइलिंग फेस एंड ही वुड बी लाइक, बिल्कुल स्माइल बंद, स्माइल बंद. मैंने कहा स्माइल बंद. सो यस, आई गॉट येल्ड एट अ लॉट. बट यू आर राइट, अभी सीरियसनेस है बिकॉज इट्स अ ड्रामा सीरीज. So you see that, you feel that, and I think it's time that we had a show like this, and I'm glad we are a part of a show like this. But that being said, we're all just incredible souls. All our souls are like this big on this set, all right? And everybody was just warm, kind. And it was a closed set, तो हम कभी set के बाहर ही नहीं जाते थे. हमारी vanities बाहर खड़ी थी, मगर हम सब एक दूसरे को चेयर करते थे. हम लोग सेट पे आ जाते थे, किसी और का सीन चल रहा है तो भी हम आ जाते थे ये देखने के लिए कि कैसा जा रहा है. एंड हमको 4 बार कोविड हुआ. नहीं हुआ because नहीं, wrong, no. But also I think Supan Verma is a director who takes a lot of pride and a lot of joy in wrapping up the show very, very quickly. So he always would make sure that as actors we have a little more time. So it's not like अब तुम्हारा इतना टाइम है तो मैं सबको रगड़ू. He likes to create an atmosphere which is fun. He likes to create an easy-going environment. And हमारा shoot जल्दी खत्म हो जाता था. So then when we are done earlier than expected, हम लोग साथ में celebrate करते थे. And there were these little things, yeah, that brought us together. And yes, the show is very serious, but the environment of working towards this show was just as fun. I love this. हाँ, आपने ऐसे सर पे हाथ रखा अभी, तो अब आप अपना बताओ कि आप बताइए कोई बीटीएस है जो आप शेयर करना चाहे, जो कुछ मस्ती मजाक या कुछ हुआ फन चीज सेट पर जो आपको याद है अभी? हाँ, कुबरा बताएगी. ये हमारा 8वां इंटरव्यू है कुबरा, तेरा पहला है दिन का, तू फ्रेश है.
तुम ताना मानो। Go for it, Cobra, go for it. कुबरा कुबरा यार तुम्हारी फन एनर्जी क्या बहुत अच्छी है, क्या बताओ यार बताओ बताओ। Go, go, come on, come on. क्या यार इतना ऐसे यू पुट मी ऑन द स्पॉट यार। फन क्या था? फन क्या क्या था हमने? मैंने एक्चुअली सोचा था कि सीबा का विग was her real hair. So I was like, wow, what a dedication. And it's true because I asked her, she said, wow. And then I came back to the vanity and she was sitting with her hair open. I'm like, what? That was a wig. Actually, you didn't recognize? I was like, no. But no, yeah, I think we used to order food. हम लोग मतलब चिली करते थे. Normal human beings. जब fun ऐसे मतलब अगर हंसी खुशी आसानी से काम हो रहा है लाइफ में वही तो fun, that yeah. itself is fun ना. अब Correct. इसके ज्यादा ऐसे what prank and this and that वो तो मतलब इतने भी छोटे बच्चे नहीं है यार. हाँ मैंने उसकी टॉफी छीन ली. हाँ ये सब ओके मैंने सुपन के चश्मे छुपा दिया. बैकअप नहीं होगा आज। हाँ। ये भी सही तरीके क्योंकि उसको क्योंकि मॉनिटर नहीं दिखेगा सुपन को. हाँ क्योंकि वो शिप के कैप्टन ये थे तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि कोई इनके चश्मे छुपा दे और वो बच जाए, ये तो पॉसिबल नहीं था। सुपर्ण कर लेता कुछ जुगाड़ उसका भी. जुगाड़ कर लेता, टेंशन नहीं है, शूटिंग नहीं रुकती। ओके अच्छा, रिसेंटली अगर हम देखें ना तो ओटीटी पर बहुत वाइड वैरायटी आई है कंटेंट को लेकर, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कहानियां, बहुत सारी अडेप्टेशंस आई है। एंड स्टार्टिंग में मे बी जब अडेप्टेशंस बननी शुरू हुई ओटीटी पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर तो शायद लोग उसको एक्सेप्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, बट अगर हम रिसेंटली कुछ शोज देखें तो लोगों ने उसको खुलकर एक्सेप्ट किया, मे बी क्योंकि मेकर्स ने काम भी उस तरह का किया कि लोगों को खुशी हुई देखकर। डू यू गाइज रियली फील ऑल थ्री ऑफ यू कि इस टाइम बिग स्क्रीन को कहीं ना कहीं ओवरशैडो ओटीटी ने कर दिया है? Play Soupy because see, I'm sorry. I know this is Soupy's question. Soupy should answer this. But come on, Suparna Sharma has just made Banda, a film that Yeah. was made for OTT and did so well that people demanded a theatrical release. Yes. I honestly think if you are making stuff that resonates with people, there is no way that people are not going to go watch it. And more than resonate, do you have the ability to tell a story that shocks you, that moves you, that makes you feel something for the characters? Then platform का कोई झंझट नहीं है यार. You know, it's really the connect that you create with the stories, and that's why stories today and stories in the history and stories in the future are so important. But Supi, I think this is your question entirely. हाँ, so to quote Kubra. Ask. But what is the question? The question is about has OTT overshadowed theater? No. So here's the thing, right? If you look historically, when radio came, cinema बंद हो गया. When TV came, cinema बंद हो गया. DVDs came, VCR came, बंद हो गया. Piracy आई, cinema बंद हो गया. अब OTT आए, cinema बंद हो गया. Cinema था, cinema है, cinema रहेगा. But fact is this: mediums evolve, they change. We change with the times. Today, we never imagined we would be consuming content on something as small as this. True. Right? So, another theater क्या है? It's a group viewing place, community place where you come together and watch an experience out of your house. Yeah. OTT is which is something you watch alone in the privacy of your car, in a train, in your bedroom, alone. 4 people can watch separately, 4 different things together at the same time. Society is changing, viewing experiences are changing, and these are patterns. But fact is this: nothing will replace the big screen experience. At the same time, it will evolve. It will keep changing. Now with Apple's glasses, it's going to change even more, right? You don't even know where we will be in 10 years from now. Yeah. Our job as storytellers is to tell the best stories we possibly can, use the different mediums that are available for us to adapt and tell different kinds of stories in different formats, in different ways. A OTT show is like a novel. A film is like a 2-hour short story, but telling you a longer story arc. So there are different experiences. I don't think anything's getting affected. What has changed is the audiences have been exposed to much more. Number one, their understanding of cinema content has changed a lot. Also, Indian cinema for a long time was Hindi cinema. Now it's no longer Hindi cinema. It's Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu, Bengali, Marathi, Bhojpuri, Gujarati. Every cinema is Indian cinema. Indian cinema, actors from here working in the south, from the south working here, from Bengal coming. I mean, it's a cross pollination happening. Jishu is acting in Telugu films also, Hindi films also, and Bengali films also, right? So we are becoming an Indian entity as a whole. We are discovering a unified national voice
in a way, while keeping our USP alive. So this is a time of change. It's a time of flux. And as women, birth is painful, right? So we are giving birth to something new. That's very true and very nicely put. But इसके साथ Very nicely put, very यार, nicely, too ना? cute. Wow. GPay karo, Wow. GPay me money right now. हाँ. बिल्कुल नहीं यार, we all owe him a lot of money यार. We owe him a lot. We owe him a lot of money. Actually, he owes Kajol the most amount of money. No, she owes me. हाँ. I thought it was the other way around. अरे यहाँ पर अभी हमने मीडियम्स को लेकर बात की तो शिवा आपसे एक और चीज जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि आपकी जर्नी अगर हम देखें इन द एक्टिंग वर्ल्ड इज समथिंग टू लुक एट. इतने सीरियल्स किए, फिल्म्स की या वेब सीरीज वगैरह में आप काम कर रहे हो, इतने साल दिए हैं आपने एक्टिंग को, बट ये कौन सा वो एक चीज है जहाँ पे आपको लगता है कि आपने सबसे ज्यादा सीखा है या सबसे ज्यादा खुद को एक्सप्लोर किया है एज एन एक्टर? बिकॉज आपने सीरियल्स भी बहुत किए हैं. ये सीरियल्स में कौन एक्सप्लोर करता है यार एज एन एक्टर. मतलब once the daily soap scenario happened that I think ruined television completely. तो उसके बाद तो कंटेंट तो समझ आया नहीं क्या ही था वो ना. तो one would only land up on a TV set just to pay the bills. And I've never been happy with any work that I did there. But before that, in fact, when one had newly come to Bombay, there was some incredible television happening. Which, if I mean, we're speaking of television, तब होता था कुछ TV माने literally content and who really had a level of aesthetic that one would sort of engage with that. But सीखने को तो यार हर चीज में ही मिलता है ना. अगर आप सीखने को ऐसा कॉन्शियसली तो मैं गुड उसमें नहीं हूँ. आई थिंक वी जस्ट अब्सॉर्ब एज एक्टर्स ना. वी कीप अब्सॉर्बिंग. वी आर लाइक स्पंजेस ना. तो वो कहाँ से क्या पर्कुलेट करता है. आई एम नेवर बी एबल गुड आई कांट डिसेमिनेट दैट. बट theater has been the base to start with. I mean, that's how I started. So I think, but again, I would never compare this to the other mediums because it's a completely another medium altogether, which is not to be compared with either cinema or with OTT or television. But सब जगह से सीखने को मिलता है यार. आप जिंदा हो उसी से सीखने को मिलता है ना. I think that's our real school as actors. No, actually, not so much even the work so much, but it's really who you are today. What is it? What are your five senses taking in? And that's really the सीखना. Yeah. अच्छा, टॉकिंग अबाउट काजोल, क्योंकि अभी हमने काजोल का जिक्र किया था, तो OTT पर काजोल आती है एक वेब सीरीज के साथ. पहली बात तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, लेकिन उससे पहले सुपर मैं ये जरूर पूछना चाहती हूँ कि काजोल का वो पोस्ट डलवाने का आइडिया आपकी टीम में से किसका था? टफ ट्रायल वाला, जिसने सबको कर दिया था कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया. अगर वो मैं आपको बताऊंगा तो मुझे आपको कोर्ट लेके जाना पड़ेगा और ट्रायल होगा और मतलब खाम का लॉयर्स के पैसे खर्चे देने पड़ेंगे. क्यों? सोनाक्षी नहीं. Or in the words of a client, which lawyers ask you to advise, I refuse to give an answer. I am using the First Amendment right. Is it I plead the fifth or is it I plead the Fifth Amendment ना? I plead the fifth. Yeah, I plead the fifth. अब हमारा ग्रीन कार्ड आ गया है तो हम बोल सकते हैं. आ गया तुम्हारा ग्रीन कार्ड? आया नहीं है बट बोलने में क्या जाता है. हाँ, बोलने में क्या जाता है. Anyone who lives beyond Juhu, beyond Oshivara needs a green card. All right. फिलहाल मैं ये चीज मैं यहाँ पर कोई बात नहीं, अगर अभी सुपर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी इसके बारे में जरूर बात करेंगे, मे बी ऑफ द कैमरा. लेकिन ये जरूर बताइए, क्योंकि काजोल की एक अलग तरह की एक परसेप्शन है लोगों के बीच में कि शी इज वेरी फन एंड बहुत हंसी मजाक में रहती है, बहुत अनफिल्टर्ड रहती है. हाउ इज शी ऑन सेट? कोई कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा उनके साथ? She is very happy on set, and the best part is that she doesn't come over prepared. She'll come on the set knowing क्या करना है, but then it's magical to kind of unfold and create on set. जहाँ एक scene दिया जाएगा, she'll rehearse a few times, and she's spontaneous, she's natural, and honestly, it's partly God-given gift, partly her hard work, years and years of it, knowing herself, understanding herself, and the camera just being absolutely and completely in love with her. So it is a mix of too many things. Yeah. Kupra and Shiva ma'am, you have something to say about Kajol here? कोई इंस्टेंस हुआ सेट पर जो आप लोग शेयर करना चाहें?
इंस्टेंस तो नहीं, बट हाँ, बट she's really that. वो जो सुना है वो तो सच ही है. But like again, I've been saying in the interviews, it's not like you're really working with a star. I mean, she of course Yeah. comes with that thing, but because she is that. But truly, when you're working with her, it's really like working with a really really gifted actor. है ना? You're very clear that you're in the presence of that. बहुत बहुत relatable और गिविंग है whilst working with her, and लिटरली बहुत अप्रिशिएटिव और टीम प्लेयर तो है ही बिल्कुल. और हमको आई थिंक आई एम श्योर एवरीबडी हैज दिस एक्सपीरियंसेस विद हर वेयर शी इज जस्ट कॉन्स्टेंटली गोइंग on and on about just beautiful stuff she has to say about you. There's no need to do that. आपने एक बार बोल दिया चलो हो गया, हमको अच्छा लग गया. लेकिन literally every time we would come on set she would just start off by just saying something really nice. That's it's special. Her want to do that extra thing. She needn't, but she does. And yeah, and she's truly a wonderful actor. Yeah, तो देखने में ही मजा आता है when you're working with someone like that. ना, it's lovely. Yeah. Okay. Good. So, but who has surprised you the most? Oh, okay, I can see a kitty here. Okay, she's gone now. All right. So, Subhan, who has surprised you the most during the shoot? If I have to ask you that, who has surprised? Surprise. Kiran Kumar surprised me the most. Lotia Pathan. I love. I don't want to take selfies and all. Yeah, I'm like a big fan of Bollywood villains. Like for anybody who watches or like goes through my social media, you know what a big fan of Amrish Puri I am. What a big fan of Ranjit I am. What a big fan of, So when we got to work with Sir, even if it was like for 3 days, I was just like, oh my God. And then Kajol told me very quietly in the corner, like, Daddy, Sudo, what you have? ओके ओके, ग्रेट टू नो दैट. सो इसी के साथ जैसे कि मैंने बोला कि ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, एंड आई हैव दिस हैबिट कि कोई भी ट्रेलर आता है तो मैं खुद देखती हूँ, और खुद तो अपनी ऑफ कोर्स हम जजमेंट बनाते हैं किसी चीज को देखकर, लेकिन मैं साथ ही ये जरूर देखती हूँ कि लोगों के कमेंट्स कैसे आ रहे हैं. एंड ट्रायल के ट्रेलर को डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोगों को जैसे मैंने बोला कि क्यूरियोसिटी पैदा की है, एंड लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत वेट कर रहे हैं कि जब आएगा तो क्या होने वाला है क्या नहीं. कैरेक्टर्स, कास्टिंग, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, एंड द एंटायर वाइब जो क्रिएट की गई है, द मूड, दिस इज समथिंग रियली नाइस जो लोगों ने अप्रिशिएट किया है. सो कूडोस टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट. एंड अब सुपर्ण, आगे किस तरह की कहानियां लाने का प्लान है? इज देयर अ सर्टेन जॉनर दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर राइट नाउ इन द नेक्स्ट 2-3 years, या फिर you're just going with the flow? I have a show called Lutere coming out, which Hansel has showrun and Jay has directed. It's on Somalian pirates. Then my next show is Sultan of Delhi, which I've written and co-directed with Milan Luthria. That's a saga set from the partition time to 1965. Okay. Then I've ran it 2, TFM3, a show that I'm doing for Amazon, 2 of them in fact, different genres. So you'll see a lot of things from Apitara which are very, very chalk and cheese different. Oh, Five Supan Verma. oh. Five. Really nice. Looking forward to all of that. And अभी के लिए we are definitely looking forward to trial. We just really hope कि बहुत पसंद आए हमें, और ये ऐसा हो जैसे हम binge watch करें, जैसे आजकल हम कहते हैं कि अगर binge watch कर लिया तो मतलब बहुत अच्छा है. 100% you're gonna binge watch this show. 100% you're gonna love this show. There's no reason for you not to love it. And the thing is that when you watch something that has been done with so much love and honesty, then अगर आप उसमें मतलब अपना bias डाल रहे हो तो that's like really your problem. We had a great time shooting this show, and we had a great time bringing you this story. And you're right, like वो जो reactions आप देख रहे हैं across the board, honestly speaking, I had the same reaction. So when you create something that like makes you skip a heartbeat, I feel like it's a very larger than life feeling, and I feel like there hasn't been like an iota of dishonesty or and I think we all were just very, very satisfied after every day of work, and I think that's going to show, because जब आप positively और happily कुछ काम करते हैं तो उसका effect वही होगा ना. ट्रू. आई एम श्योर कि अगर आप लोग इतने सेटिस्फाइड हैं तो हम भी एज व्यूअर्स सेटिस्फाइड होने वाले हैं.
So looking forward, and all the very best to all of you. And we really hope to see you soon in Delhi. Zoom पे इतना मजा नहीं आता जितना मिलकर आता है, तो वो तो हमेशा है ही और हमेशा रहेगा। बहुत जल्द। एंड तक नहीं छोड़ा, एंड तक दिल्ली। Yeah, वो तो है यार, but knows that वो एक अलग फन है। मिलने के बाद बातचीत अलग तरह से होती है, वो हम सब मिलके करेंगे दिल्ली इज लव। Delhi is प्यार। Anyway, Yeah. thank you guys. Thank you for joining us here, and it was lovely chatting with you all. All the very best for Try.